हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द Pavilion। मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. And today we've got Group 1 games all lined up for you. But इससे पहले कि हम उसकी बात करें, आइए जरा नजर डालते हैं Group 1 के पॉइंट्स टेबल पे। सूरत हाल कुछ इस तरीके से है। न्यूजीलैंड बिल्कुल टॉप पे, इंग्लैंड दूसरे नंबर पे 2-2 पॉइंट्स के साथ दोनों टीमें। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, उनके भी 2-2 पॉइंट्स हैं, लेकिन उन्होंने 2-2 मैचेस खेले हुए हैं। एंड देन अफगानिस्तान एंड आयरलैंड, दे हैव प्लेड 1 गेम ईच एंड लॉस्ट, सो देव गॉट नो पॉइंट्स। ये है सूरत हाल इस ग्रुप की। और आज के जो 2 मैचेस हैं, आइए उन पर जरा नजर डालते हैं। पहला मैच आप लोगों की खिदमत में, और दोनों मैचेस जो है वो आज मेलबर्न में, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट गेम, इट्स इंग्लैंड clashing with their neighbors Ireland at 9 a.m. in Melbourne. This is the Group 1 match 20. And उसके बाद it is Afghanistan taking on New Zealand. New Zealand, who brutally defeated Australia in their first game. 200 runs, 89-run defeat. They are looking good. They are looking confident. That's 1 o'clock at Melbourne. And with that, let me bring in my panelists, the legends, my friends, the people who've served the game of cricket and our great nation of Pakistan. Please welcome to the studio. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Waqar, Younis, and the switching. Oh, there we are. This is Wasim Akram, the legend himself. Good morning, assalamu alaikum, gentlemen. 2 clashes coming up here today. Interestingly, this is the second time that Ireland and England are going to be playing each other. The first time they were supposed to play each other, it was a washed out game in the T20 World Cup. This is the first time, if this game goes through, that they will actually be playing against each other. Despite being neighbors, one would expect them to be playing more, Wasim, but they haven't been. Yeah, they haven't. They played only 1 T20I before, and I think Ireland cricketers especially have a lot of experience of county cricket. 6 of them, they do play in T20 Blast for different counties, and their main player is Paul Sterling, who's got 2,600 runs plus in that format with great strike rate. So they have an experience how to play England, but I suppose England is a very formidable side. We have seen so far, I think he'll be a side to watch. They're one of the favourites to win this World Cup. So big test for Ireland today. So Ireland so far, they did really well. They defeated Scotland, West Indies in the qualifiers, and then they came in. But then they got defeated by Sri Lanka by 9 wickets, Waqar. So Ireland really need to pull up their socks for this game. ये इस तरह की टीमें जो एसोसिएट्स टीमें होंगी, इनका ग्राफ आप देखेंगे कि अप एंड डाउन ज़रूर जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आती है इनसे। यस, इनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे वसीम भाई ने कहा, पॉल स्टर्लिंग है, इनका कप्तान है, they've got lots of experience, but the thing is playing against a test nation और जो रेगुलर T20 क्रिकेट खेलते हैं, कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। देन इस तरह की सिचुएशन में आप चाहते हैं कि जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो रन करें और वो लेके चलें टीम को। समटाइम अगर वो जब फेल होते हैं तो देन दे जस्ट सॉर्ट ऑफ नोज डाइव हो जाता है उनके लिए थोड़ा सा। Let's not forget that they are known as the giant slayers as well, the Irish team. Oh yeah, I mean उन्होंने सरप्राइज किया हुआ है। अगर कोई टीम इस टूर्नामेंट में किसी को अपसेट कर सकती है, they are one of them। और उनके पास सोर्सेज ज़रूर हैं, लेकिन England, the way they played, I think they're just too good. I mean, yes, Afghanistan के against थोड़ा at the end they became little scratchy. They could have finished that game with comfort. थोड़ा सा उनको hiccup ज़रूर हुआ, लेकिन I'm sure they've learned from that game and they'll come really hard at Ireland. Yes, they would. Misbah, interestingly, both Wasim and Waqar pointed out England, one of the favourites, no question about it. But when they were chasing that 113 against Afghanistan, they did that in 18.1 overs and they did lose 5 wickets in the process. Obviously, I think Afghanistan की जो spin bowling है especially, वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल आप कहेंगे, और क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है उनकी। दैट्स द रीज़न कि सारी टीमें, कोई भी टीम उनके अगेंस्ट खेल रही हो, टोटल जितना भी हो, मुश्किल कहीं ना कहीं ज़रूर आती है। बट आई थिंक ओवरऑल जो बाकी टीमें हैं उनका जो बॉलिंग अटैक है वो टोटली डिफरेंट है। एंड इंग्लैंड मेरे ख़्याल में कोशिश करेगी कि वो अब के जो अगले मैचेस है, स्पेशली आज का मैच, कि वो कन्विंसिंगली जीते, क्योंकि पिछले मैच में एक तो स्टार्ट था, पहला मैच था, थोड़ा सा लगा, बट आई थिंक जैसे वकार भाई ने कहा कि दे आर अ वेरी गुड साइड। सो फॉर इंस्टेंस आई क्वेश्चन टू ऑल 3 ऑफ यू, जैसे मिसबा ने कहा कि कन्विंसिंगली जीतने की कोशिश करेंगे, वो एज ए टीम
जब टीम वर्ल्ड कप के सेकंड मैच खेल रहा है, तो आप ये टीम मीटिंग में बात कर सकते हैं, करते होगे या करनी चाहिए कि जी आज हमने ये मैच 15 ओवरों में जीतना है, 20 ओवर का रन, ये नहीं, आई डोंट थिंक सो। कन्विंसिंगली मींस के आप मीटिंग में या कहीं पे भी ये बात ज़रूर करते हैं कि लेट्स प्ले टू आवर पोटेंशियल, क्योंकि वो ऐसी टीम है कि वो किसी के अगेंस्ट भी खेल रही है, उनका जो पावर हाउस है बैटिंग में वो ऐसा है कि वो 200 प्लस रन्स करने वाला है। तो आई थिंक ये ज़रूर बात हो सकती है कि हमने अपने पोटेंशियल पे खेलना और पॉजिटिव क्रिकेट। Shoaib, now England, 3 matches that they played at the MCG, T20s, they've lost all 3 of them. Ireland will be playing here for the first time. How do you think this is poised? I guess those 3 games they must have played against Australia. Yes, they have. Yes, that's और correct. आज वो आयरलैंड के साथ उनका मैच है, डिफरेंट वो है, मतलब बिग प्लेटफॉर्म वर्ल्ड कप का मैच है। तो लास्ट मैच वो अगेंस्ट अफगानिस्तान जीते हुए हैं, इवन दो इट वाजंट कन्विंसिंग, बट स्टिल आई एम श्योर A win is a win. A win is a win। और वैसे भी फर्स्ट मैच में थोड़ा सा वो असेस करना चाहते होंगे, थोड़ा सा वो पिच भी ऐसा था कि वहाँ पे सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, बट गेटिंग इनटू वर्ल्ड कप विद दिस कॉम्बिनेशन व्हाट इंग्लैंड हैज़, आई गेस दे आर गोइंग टू गिव टफ टाइम्स टू मोस्ट ऑफ द टीम्स। जस्ट टू ऐड ऑन, जब वसीम भाई ने भी सवाल किया और बिस्बा ने भी उसका जवाब दिया, उसमें ये होता है कि जब आप कहते हैं ना कि हम इनको उसको कन्विंसिंगली जीतेंगे या इसको डोमिनेट करना चाहेंगे, वो शुरू में आप नहीं कर सकते, नॉट इन द बिगिनिंग। येस, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आप एज अ टीम रहते हैं कि अच्छा अगर हमारे पास सिचुएशन आएगी तो देन वी विल जस्ट सॉर्ट ऑफ मेक श्योर वी टेक ऑफ। Okay. वो कहीं ना कहीं हाफ वे जाके, या बैटिंग आपने पहले की हो या बॉलिंग की हो, हाफ वे आके जब देखते हैं ना सिचुएशन, जो आपने कल देखा ऑस्ट्रेलिया की गेम में, कि दे जस्ट सेंस कि हम लोग को यहाँ हम रन रेट ठीक कर सकते हैं, हमारे पास इतना पावर हाउस हमारे पास ऐसा है, जस्ट गो आफ्टर द बॉलिंग। आई थिंक इंग्लैंड विल प्रोबेबली असेस दैट कंडीशन कि अगर इस तरह की सिचुएशन आई, या इवन आयरलैंड भी, आई एम नॉट राइटिंग देम ऑफ, तो किसी भी टीम के पास जब आती है तो मिडवे ऑफ द इनिंग या मैच, देन दे स्टार्ट थिंकिंग ओके लेट्स गेट आवर रन रेट ऑन द स्ट्रीट। A difficult tournament so far for the captains. The batting averages of the captain in this tournament, in this T20, has been the lowest, 15. I suppose it's early days. Early for days? the World Cup. Yeah. अभी शुरू हुआ है और मेरा फोन आ गया, साइलेंट नहीं किया मैंने obviously। कोई बात नहीं, कोई नहीं, हो जाती है। केड़ा शो को देख रहे होने। But yeah, coming back to the captains, I think it's early days to even assess skippers. एक मैच, दो मैच हुए हैं, कुछ टीमों ने एक भी नहीं खेला अभी। So I think जब ये हाफ पे होगा तो फिर जाके assess करेंगे how the skippers are doing as batters. Yeah. Is that the only challenge, Misbah, that the skippers have in this World Cup so far? वर्ल्ड कप में स्किपर्स को काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। आई थिंक जो टूर्नामेंट आगे जाएगा, टीम की परफॉर्मेंस भी कप्तानों को अफेक्ट करती है, एंड ऑब्वियसली अंडर प्रेशर आप होते हैं। टीम अच्छा कर रही है तो फिर इतना नहीं होता, फिर आप कहीं ना कहीं चिप इन कर जाते हैं, बट आई थिंक अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, टीम भी सफ़र कर रही है, दैन वरीज आती हैं। That's Butler, the English captain Class there. player, Yeah. Class player, and he's one of those players who can win you a game on his own. Yeah. Once he gets going, and the way he play his shots, he looks so comfortable, poised, balanced. As a bowler हम देखते हैं तो लगता है कि इसकी कोई weakness नहीं है जिस तरीके से वो हिटिंग करता है। Especially in form. वो ये है कि कैप्टन्स, हाँ ठीक है, अर्ली डेज एज वी ऑल सेइंग, बट किसी एक कैप्टन को तो वो होना चाहिए था। आर दे टेकिंग टू मच प्रेशर or they're not playing their natural game? Like I said, maybe we are digging too much into that because it's just too early in the maybe it's too early today. It's early for us. It is early morning for And it us, is no early for question the about that. captains also. Yeah, early. Yeah. वो कहते हैं ना, the early bird catches the worm. आई थिंक जो सुपर 12 में अभी खेली है टीम, जिन्होंने एक मैच खेला है, उनको तो आप अभी सोचे ही ना एक मैच में आप क्या असेस So, मिसबा, जब ये दिखाते हैं टेलीविजन या वर्ल्ड कप के द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द वर्ल्ड कप, सो उसमें जो एसोसिएट नेशंस हैं जो क्वालिफायर्स खेले हैं उनकी विकेटें आ रही हैं। सो आई सपोज जब ऐसा सिस्टम हो, यू स्टार्ट from when the teams have qualified, Agreed. and from there you start the wickets and runs counting. True so that. इसका मतलब True जो that. टीमों ने 3 मैच पहले खेल रही हैं, उनके प्लेयर्स, बैटर्स और बॉलर्स are way ahead of the other teams. I think that probably ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि
एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि ये सर्टन लेवल से आगे जाएंगी, तो फिर उनके जो रन्स वगैरह या विकेट्स है वो काउंट की जाती हैं, क्योंकि कहते होंगे यार देयर इज लेस चांस दैट दे विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, ये नहीं कि नहीं करेंगे। बट आई एग्री विद यू, आई एम टोटली विद यू कि जी आपका जो रिकॉर्ड्स हैं वो फिर जब वर्ल्ड कप शुरू हो, जो 12, 14, 16 अगले साल, तो because as a bowler, if I'm looking at it, I'm playing a World Cup and I want to be the #1 wicket taker, and I play my first game, suddenly I look at the board, the guy with 10 wickets who played 4 games before me. So that it's not the, I suppose it's it's not fair. I think that equation needs to be looked at. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion, but when we come back, there's more to talk about the 2 games ahead. Keep watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. Group 1, 2 games up today. We're going to be witnessing England clashing with Ireland and then Afghanistan taking on New Zealand. अपने मेहमानों के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त कुछ देर पहले। ज़रा ये MCG के स्टैट्स को देख लेते हैं, वेन्यू स्टैट्स जो हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं वसीम वकार। That if you look at it, this is how the average score 147, and in the last 6 T20Is, chasing teams have won six consecutive games. Teams chasing. इसमें ये भी, I mean, they're not like, are they all international first of all? और दूसरा ये है कि day game, evening games makes a big difference. Sometimes evening games होती हैं तो they're a little bit different to what we play in the afternoon. So hard to judge, but 147 I think is below par on this pitch what we have seen from the previous match. Yes, ball deviate ज़रूर किया है क्योंकि fresh pitch थी। आज की pitch we'll wait and see कि आया वही pitch है जिस पे पाकिस्तान खेला है। अगर तो वही pitch है तो it might just eased up a little bit. तो हो सकता है थोड़े से रन करने आसान हो, तो 147 might be just below par. आप पिच का जिक्र कर रहे हैं तो पिच को देख लेते हैं, क्या कहते हैं? Let's go. Let's take a look at the pitch report brought to you by Ensure. Well, I think we're all still recovering from that India-Pakistan clash the other night here at the G. We're here for Game 2 of this tournament, and it is England against Ireland, and it's a fresh pitch. It's a little bit further along from the India-Pakistan pitch, so that means that the dimensions change ever so slightly. Behind me at the Shane Warne stand end, over to fine leg, it's about 67 metres. Over to the leg side, if you're a right-hander, it's about 84 metres. And then there's a shorter boundary, about 70 metres over to the offside. So I think both teams will be looking to try and exploit that. That will come into play for sure. In terms of the weather conditions, well, there is a bit of rain around. It's overcast. The pitch, well, there's a lot of green on the surface. There's a nice even covering. So I'm anticipating that the bowlers will get something out of it. But here's a bowler alongside me. I mean, of course, he bats as well. Shane Watson, what can you tell us about this pitch? Yeah, this wicket looks really nice, especially for a fast bowler. There's enough green grass, enough live grass on this surface. As you can see, there's a bit of dry grass, but there's quite a bit of green grass in here as well, which for me means that the ball's going to grab onto the seam a bit. And also, because there's a bit of moisture, it means there's going to be some tennis ball bounce. And we've seen between the bounce variations between the wickets in Hobart and Perth and also at the MCG that there is more bounce here in Melbourne because of that little bit of extra moisture, and the batsmen always talk about the tennis ball bounce. In regards to the toss, the captains are going to want to win the toss and chase because the statistics alone show that 8 out of 9 games are won by chasing, and the bowlers, they're going to be licking their lips. The fast bowlers in particular, there's going to be enough in them for them, so they'll be excited to be able to get out here and put on a show. Right, there you have it, Misbah. Your thoughts on that? कितनी खूबसूरत हरी pitch है ये? बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल में बैट्समैनों को हार्ट अटैक देंगे। मुझे लगता है पिछले मैच से कोई डिफरेंट नहीं होगी। सो दैट इज़ समथिंग जो कि इंग्लैंड ठीक है, बॉलर्स उनको अच्छा लगेगा, बट आई थिंक ओवरऑल जिस तरह की उनकी बैटिंग है वो कंसर्न्स होंगे, क्योंकि उस तरीके से बिल्कुल उस तरीके से आपने जब सीम हो रहा है अगर बॉल, तो उस तरीके से आपकी शॉट्स थोड़ा सा आपको डिफरेंट खेलना पड़ता है इस पिच पे। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमने देखा कि ऊपर से जो टीम जिसने पहले 10 ओवर बड़े आपको देख के खेलना पड़ता है और फिर आप उसको
लेटर ऑन जो है वो आप उसको कैश कर सकते हैं, बट आई थिंक इट विल बी विद न्यू बॉल, स्पेशली जब तक हार्ड रहेगी, सीमर्स कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलेगी। इतनी घास तो मेरे गार्डन में नहीं है या कराची पानी नहीं है। दैट्स अ लॉट ऑफ ग्रास एंड थिक ग्रास एंड ऑफ कोर्स हमारे एक बैट्समैन थे, ग्रेट बैट्समैन थे, उनको ब्राउन विकेट होती थी ना बिल्कुल, वहाँ भी उनको कहते हैं गंदा इलाका है। सो अगर ये देख लेते तो उनको हार्ट अटैक हो जाता। और भी बोलते हैं इसको बुच्चियाँ वाला का। कौन सा? बुच्चियाँ वाला। So this is one of those pitches, overcast condition, ईशा ने बताया वहाँ पे। So one of those pitches where you win a toss and obviously you bowl. Yeah, I think so. That yeah, I guess that is how. So it is overcast though, so we don't know what happens when the rain comes down. Either way, you're right. You know, Duckworth Lewis भी आ सकता है, pitch moisture भी है, घास भी है. You know, if you win a toss, it's kind of a win-win. और I think ये ऐसी pitches हैं ये आपके सामने नजर आ रहा है. 18 degrees feels like 18. Yeah. Humidity. Cloudy. Humidity is there. Nice up there. 86% है। Yeah, I think ये आयरलैंड की कंडीशंस हैं, क्योंकि नॉर्मली आप आयरलैंड में खेलते हैं वहाँ पे ऐसी कंडीशंस होती हैं, और ऐसी कंडीशंस में मेरे ख्याल में जो बड़ी टीम है थोड़ा सा उनके लिए ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ट्रू पिच होगी तो वो जितने भी उनके स्किल्स हैं, उनकी बॉलिंग के स्किल्स हैं, उनकी बैटिंग के स्किल्स, वो उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो उसको थोड़ा सा बराबर कर देती हैं। Yeah, all right. Let's talk about Mark Wood, the English player. Mark Wood की एल्बो की सर्जरी हुई, उसके बाद 5 मैचेस अब तक वो खेल चुके हैं, 11 विकेट उन्होंने लिए हैं, 9.18 की एवरेज के साथ। इकोनॉमी हैज बीन रियली गुड, 6.31. Has he changed after the surgery, Shoaib? उनकी एंकल की भी सर्जरी हुई है इससे पहले जी। तो आई गेस ही नोज हिज स्ट्रेंथ्स, और उनकी यूटिलाइजेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट इज़ आल्सो रिमार्केबल और हैज़ बीन। तो आई गेस क्लैरिटी उनके सामने है, उनको बताया हुआ है कि आपने ये मैचेस खेलने हैं या ये सीरीज़ खेलनी है, तो वो पहले से ही उसको जो है क्लियर मैसेज चला जाता है। एंड आई गेस जब क्लैरिटी आपको मिलती है देन एज अ इंडिविजुअल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। और उनकी बहुत अच्छी एक चीज़ जो हम लोगों ने लास्ट मैच में देखी, इतनी पेस रखने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी लाइन और लेंथ जो है वहाँ पे बॉलिंग की। और यूजुअली क्या होता है कि जब आपके पास इतनी पेस हो, ऐसा पिच हो, ऐसा बाउंस हो, तो आप थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं। बट ही इज एक्सपीरियंस्ड, प्लेड इनफ इंटरनेशनल क्रिकेट नाउ, और he's been consistent as well. Yeah, he has been. Waqar, how does he look to you after the surgery? $1 million. I mean, he's in conditions में he is very lethal. Although हालांकि अभी पाकिस्तान भी recently आया on a slow pitches, इसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है. That's a big plus for England. वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसकी इंजरी का रीज़न बताने लगा हूँ कि वो आपने गाड़ी का जो बॉडी छोटी होती है, इंजन बड़ा होता है, तो इसका वो वाला सिलसिला है कि इज नॉट दैट बिग अ ब्लॉक, इज जस्ट गुड जंप, नाइस एंड हिट्स द डेक हार्ड। तो कई दफ़ा जब आपके पास इंजन बड़ा हो और आपको यू आर बीन आस्क्ड टू जस्ट थ्रॉटल एवरीथिंग, तो यू आर बाउंड टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन और हैव इंजरीज। एक चीज़ इन्होंने की है, इन्होंने रन अप लंबा कर दिया। बीच में छोटा था रन अप और वो लंबा हो गया। अब आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड, लेकिन यह है कि उसके, क्योंकि अगर आप 90 माइल्स वाले बॉलर हैं और आपका स्टार्ट छोटा है, मैं अपना बता सकता हूँ कि मुझे वो फेयर नहीं रहता छोटे रन पे, क्योंकि बॉलर जल्दी से आपके पास आ रहा है और आप खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब दूर से भागते हुए आता है ना, तो एज अ बैटर यू थिंक कि अच्छा हाँ अब ये क्या कराएगा, ये होगा। यू आर सेइंग कि वसीम भाई को तेनू डर नहीं सी लगता। वसीम भाई को हल्ले तक लगता है। Good answer, Shoaib. Very good answer. I like that. Clever. Well done. Yeah, but that's an interesting thing, because generally one would think injury के बाद, surgery के बाद, you would probably try to reduce the stress on your body, but especially after elbow surgery. Yeah, so elbow surgery के बाद टाइम लगता है, because ये सारे आपके मसल्स हैं दोबारा, पता नहीं राइट हैंड की हुई है कि लेफ्ट हैंड की हुई है। राइट की हुई होगी, बट राइट हैंड की अगर एल्बो आपकी सर्जरी हुई है, सो इट टेक्स टाइम, एंड टू कम बैक टू द पेस यू हैड बिफोर, it takes a lot of courage, it takes a lot of training,
and rehab. I mean, England is one of the best as far as rehab is concerned. I think the reason, sorry, I think the reason why उसने अपना रन अप लंबा किया है, इट्स नॉट बिकॉज के टू कट डाउन या उसको कोई लोगों, बिकॉज आपको रिदम चाहिए होता है. सर्टन बॉलर्स होते हैं, जैसे वसीम भाई थे, he was more of a shoulder bowler. The shoulder bowlers जो होते हैं, they don't need a long run up. They just skip through the crease और जल्दी से and कोई काम के साथ बॉलिंग तेज भी कर लेते हैं. कुछ बॉलर होते हैं, they need good jump and they need to gather really well and hit the deck hard. He's one of those. That's why he need a bit more rhythm. छोटे रन अप से फिर क्या होता है, फिर then you're rushing everything. So basically आप छोटे टाइम में you're trying to create more force. So वो उसको पीछे करने से वो उसने थोड़ा सा डिवाइड किया है, जिसकी वजह से I think he looks in lot better rhythm. And last game against Afghanistan, his average speed was 149. Yes. That was his average speed. कि हर बॉल इसका कम से कम स्पेस से है, नहीं तो उससे ज़्यादा ही गया. जो सबसे एज ए बैट्समैन मेरे लिए सबसे मुश्किल बॉलर है, उसका एंगल ऐसा है, वाइड ऑफ द क्रीज जाता है और वहाँ से आपको लगता है कि आपकी तरफ बॉल आ रहा है विद दैट पेस, और वहाँ से जो बाहर निकलता है, इवन सीधा भी रह जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल है. Like we were discussing earlier on Makaya Natini. Yeah. He was a difficult bowler to face. About 400. Carl Reckerman in our Reckerman as well, 80s में. But reason क्या है, जब wide of the crease bowler जाता है तेज, तो एंगल से तो उसने अंदर ही आना है ना. अगर वहाँ से आपका सीधा भी रह जाएगा तो एवरी टाइम एज लगनी है. तो एंगल से जब अंदर आता है उस पेस के साथ राइट हैंड को, तो राइट हैंड को परेशानी रहती है. उसको दोनों चीज़ें मुश्किल है. Lance Cruiser, same thing. Wide. All right, with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup, Group 1, 2 games coming up. See you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. With me in the studios, I've got the legends themselves, Shoaib Malik, Misbah Haq, Waqar, Younis, and Wasim Akram. We're talking about the two games in Group 1 today. It is Ireland clashing with England, and then we've got Afghanistan taking on New Zealand. England की बारे में जरा ये जो बात चल रही है हमारी, इकोनॉमी रेट इनकी देख लेते हैं जरा. खूबसूरत मुल्क है ना. इंग्लैंड के बारे में बात करें, बहुत खूबसूरत मुल्क है. Let's talk about their economy now. Some of the worst economy rates in the last 1 year in T20Is, Waqar, is West Indies with 8.48, followed by England at 8.30. Why do you think that is happening? England का is not good, is it? No, it's because they play. I suppose they play in England, small grounds, especially in this format, and then plus flat decks. Yeah. So that could be the reason as well. Agree. Yeah. Also the way they play, particularly in this format, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 180 वाला मैच खेलो. आर या पार टाइप. आर या पार टाइप, या हम आपको फड़काएंगे या आप हमें फड़काओ. ठीक है. तो वो इस टाइप की क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए इकोनॉमी रेट जो है ना उनका, वो हायर साइड की तरफ है. नॉर्मली ये भी देख लें कि उन्होंने ये जितनी भी इकोनॉमी है उनकी लास्ट एक साल में उन्होंने ऑलराउंडर्स खिलाए हैं ज़्यादा. उनकी बैटिंग को ज़्यादा उन्होंने उसकी बेसिस पे. Even when we played one-day cricket, remember, they had 3, 4, 5 all-rounders in playing 11. होलियोक दोनों भाई होते थे, फिर डगी ब्राउन आ गया, फिर वो फ्लेमिंग एक होता था, केंट का ईलम भी होता था, फ्रेडी भी आ गया, क्रेग वाइट भी. So they used to play a lot of all-rounders even in one-day cricket. वसीम भाई, वो जो उनका कॉन्सेप्ट इस टाइम जो वो कर रहे हैं बेसिकली, जो अभी मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा है, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू बिल्ड को 4 से 5 एक ही टाइम पे स्क्वाड्स टीमें बनाना चाह रहे हैं वो, क्योंकि जितनी अमाउंट ऑफ क्रिकेट वाइट बॉल की हो रही है वो डिफरेंट लीग्स में भी प्लेयर्स को इसीलिए भेज रहे हैं, परमिशन भी दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट 4 स्क्वाड होने चाहिए. T20 की भी हमारे 2-3 टीमें होनी चाहिए और इक्वली गुड प्लेयर. इसीलिए वो थ्रू आउट इन बिटवीन जितने भी वर्ल्ड कप्स के अलावा सीरीज़ें खेलते हैं उसमें वो बॉदर नहीं करते कि उनके कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है. स्पेशली वर्ल्ड कप्स में जैसे वुड को बचा के रखा उन्होंने, वोक्स भी कहीं खेलते हैं कहीं नहीं खेलते. वो जो मेन अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं या प्रॉपर खिलाते हैं वो ड्यूरिंग दीज वर्ल्ड कप्स, उसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं, उसमें वो अपनी सारी बेसिस कवर करके. वजह फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि हम लोग 2 टीमें क्यों नहीं बना. चलो 4 तो छोड़ो, 4 तो दूर दी गल है,
But why can't we just make even 2 teams? You're talking about Exactly, that's what I'm about I was to say. coming there. I was coming there कि जो आपकी 2 टीमें क्यों नहीं बनती? दुनिया भर ने की हैं. इंडिया ने की है. अपने ऑस्ट्रेलिया ने किया है. They just send their teams away which are totally new और teams. इंडिया simultaneously play रही थी. T20 वो इंग्लैंड खेल रहे थे और वनडेज वो आयरलैंड खेल रहे थे last this summer. So the question is कि हम लोग की टीम क्यों नहीं है पहले? और दूसरा इवन एक टीम है और उसमें भी हम एक ऐसा बंदा फखर लेके गए हुए हैं जो खेला ही नहीं हुआ, जो इंजर्ड है एंड वी डोंट नो इफ ही इज गोना बी फिट और नॉट. और दूसरा शाहीन को भी लेके गए हैं who we were not sure, we still not sure. You guys were there for a couple of years. Didn't you kind of that thought went through your mind? You as a coach, you as a bowling coach? लोग वसीम भाई जो मुझे समझ आती है वो यही है कि आप जब क्रिकेट स्क्वीज कर देंगे तो फिर ये कम हो जाएगा ना. आपका प्लेयर पूल छोटा हो जाता है. तो पूल छोटे में फिर आप छोटी टीमें बनाते हैं. यस यू गेट द बेस्ट आउट. जो हमारा इस पे जो थिंकिंग बिहाइंड जो थी वो यही थी ना कि आप छोटे स्क्वीज कर दें और जो आपके जो क्रीम है वो बाहर आ जाए. और आइडियली लाइक फहीम, अशरफ, ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं जिसके लोग आप नाम ले रहे हैं वो सेकंड 11 / पाकिस्तान टीम जब ये मेन टीम की टूर कर रही है तो ये T20 टूर्स पे जा सकते हैं किसी और टीम के साथ. Yeah, it can be done, but that has to be programmed and properly, उसको बनाना पड़ेगा तब जाके ऐसा होगा. But your question is very valid. Why don't we have one? Sorry, Shoaib, go ahead. मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि सबसे पहले आपको ये फिक्र ख़त्म करनी पड़ेगी कि अगर हम हार गए तो क्या होगा. That's the reason. ठीक है, मुझे ये लगता है कि Even as a इसकी player वजह or से as a cricket board, I suppose, yeah. देखिए वसीम भाई, एंड ऑफ द डे वी डू वांट टू सी पाकिस्तान ग्रोज. Sure. ठीक है, और प्लेयर्स निकले उसमें से. तो अगर आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है अगर वो इतना गुड इनफ नहीं है अभी के लिए, तो आप 2 टीम्स बना दें. जैसे आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, टू सम एक्सटेंट श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहे हैं, या आयरलैंड के, स्कॉटलैंड के, इन टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो आपकी जो सेकंड टीम है जिसको आप ग्रूम कर रहे हैं, जो प्लेयर्स आप समझते हैं, वो उनके अगेंस्ट सीरीज़ खेलें. और जब आप बड़े टूर्स पे जा रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, तो इनके अगेंस्ट आपके जो मेन जो आपकी टीम है वो खेले, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है. इसकी रीज़न वो पॉइंट आउट करनी बड़ी ज़रूरी है. देखें, सारी बात होती है वो जी प्लेयर इनसिक्योर हैं, कप्तान इनसिक्योर है, उसके बाद आपका कोचिंग स्टाफ इनसिक्योर है. लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सारे इनसिक्योर क्यों हैं, क्यों ये इनसिक्योर फील करते हैं? क्योंकि आपका क्रिकेट बोर्ड इनसिक्योर है. दे आस्क यू टू बिल्ड अ टीम फॉर नेक्स्ट 7-8 years. और एक मैच आप हारते हैं तो आपको क्रिकेट कमेटी बुला लेती है. आप 8 साल 9 साल की प्लानिंग मांगते हैं और पेशेंस इतनी नहीं है कि आप डेवलपमेंट में एक मैच हारते हैं तो आपको बुला के अजीबो गरीब सवाल शुरू हो जाते हैं. हमने तो ठीक सवाल पूछे थे आपसे. सर तुसी भी है अजीब तुसी भी है. Alright, we've got कमेटी में था. तो बेसिकली या मैं जवाब दे रहा था. और सुन लगा जी, ठहर जाओ. वसीम भाई we've got Livingston with us. Let's listen in. Liam, first let's start with your form. How you feel? How did you hit it the other night? Yeah, I felt really good actually. I've had a nice little break. I think the injury sort of gave me a nice little refresh before the tournament. So yeah, I was quite surprised how good I felt from ball 1 the other night. So yeah, it was a little bit of a different innings, and yeah, just trying to see the boys home. So yeah, hopefully started off on a good note and we can carry it on today. Yeah, tell me about kind of the planning with regards to that. When you get a low score like that, has there been the chat before the tournament that kind of needs to be knocked off or not? No, our chat the whole way through the tournament is just to play what's in front of us, and we've all played a lot of cricket. We've all played a lot of cricket together, and we trust each other to sort of play what's in front of us. So yeah, the other day the key was to try and get the 2 points, and thankfully we did that. Obviously, we want to try and chase scores down as quickly as we can, but I think the most important part is to make sure we get over the line. So no, it was nice to get off to a winning start. Yeah, so how much is rain, for instance, weather, a discussion within a change room in that regard? No, it's not. You can only talk about the things that you can control. We can't control what's going to happen with the weather. So, yeah, making sure that we control what we can control. And like I said,
play what's in front of us. Yeah, we obviously can't make any impact on the weather. So yeah, what will be with that, and hopefully we can get a full game in today. As you go in today, what are you thinking? Try and win the game, and I think that's what everybody thinks. Whoever we play against, whatever we do, ultimately we want to win the game of cricket, and today's no different. All the best then. Thank you. All right, there you have it. Interesting thing. आयरलैंड ने जो 6 मैचेस अभी तक जीते हैं अपने T20 वर्ल्ड कप की तारीख में, वो सारे 6 के 6 मैचेस चेस करते हुए जीते हैं। आज तो सारे स्टैट आ रहे हैं बाहर। आज भी 36 सवेरे। Good on you, Which yeah. reminds me, Wasim has a special talent, Waqar. You guys no idea. That talent is he can really go through stats like that. That's good. Demos दिखाएं आपको? That's a go on. नहीं करेंगे ना, पाकिस्तान मैच में करेंगे। पाकिस्तान मैच में करेंगे। 6 पाकिस्तान किताबें ये लाके याद देखोगे, रखिएगा हम मैं एक आपको। किताब 2 सेकंड में पढ़ूंगा। This is really amazing. Wasim has this really incredible talent कि ये 2 सेकंड के अंदर पूरी किताब जो है वो पढ़ सकते हैं। 2 से 3 सेकंड लगते हैं इनको। और ये जो अगला पाकिस्तान का मैच है उसमें हम आपको इसका एक लाइव डेमो दिखाएंगे बराह रास्त जब वो कर रहे होंगे। तो स्टैट से याद आया तकरीबन 6 मैच जीते हुए चेस करते हुए। Yeah, I know. So they like chasing. They like chasing. But different ball game, different attack, different pitch. But like you said yourself, they are called the giant slayers. And और ऐसी टीमों के खिलाफ inexperienced कह लें या upcoming कह लें या associate countries कह लें, you can't take it easy. You will walk over. Whenever you think, doesn't matter how good you are, will walk over. As teams like this will definitely put you down. So England will be on their toes against Ireland because it's a dangerous side. Yeah, talking about England, Alex Hales. When he starts hailing, he hails. No two ways about that. Fakhr, honestly, I feel that at one stage, I mean, I think he's wasted about 3 years of his career. He himself to blame. हाँ बिल्कुल है, उसमें वो कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा प्लेयर मैंने T20 का उस टाइम जब ये पहले खेलता था कोई नहीं था। इनका बहुत डिस्ट्रक्टिव ओपनर हुआ करते थे। अभी थोड़ा सा मुझे ऑफ कलर अभी तक देखें, इवन यहाँ पाकिस्तान में भी वो इनकी वो क्लास या उस तरीके से जो बॉल को हिटिंग मे बी अगर जब इन कंडीशन में जाएंगे जहाँ थोड़ा बाउंस होगा, अगर ट्रू बाउंस होगा तो आई थिंक ही विल बी वेरी वेरी डेंजरस। एंड दिस मैन सॉल्ट, आई एम नॉट श्योर व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग। ही इज अनदर वेरी dangerous player, another doctor. He's not in the team, but the left-hander who played really well against Pakistan. Ben Duckett. He's not in the squad. Yeah, he's not in the squad. So I mean, they have got so much talent. I mean, plan ठीक है, but you also go with the. वो plan ये किया था कि he plays better against spin. Okay. जब वो पाकिस्तान आए तो वो पूरा होमवर्क करके आए थे कि वहाँ पे मिडिल ओवर्स में जैसे नवाज है या शादाब है, वो स्वीप अच्छी मारता है, स्वीप वगैरह रिवर्स स्वीप बहुत अच्छी मारता है, या इफ्तिखार है ये बीच में बॉलिंग करेंगे तो उनको वो टैकल कर सकें। तो इसलिए जो है उन्होंने talk about planning, we talk about strengths of your team, we talk about Pakistan 2 teams, but look at England's strength. The red ball squad will be training in Abu Dhabi after this because उन्होंने पाकिस्तान भी आना है, and England Lions A team will be with them in Abu Dhabi training, and then ODI squad while this is happening will be playing after the World Cup in Australia against Australia. Wow. वसीम भाई आप जैसे प्लानिंग की बात कर रहे हैं, चलें ये तो इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, इनकी तो बहुत अच्छी सिस्टम है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। इवन साउथ अफ्रीकन्स, आई वाज प्लेइंग विद इमरान ताहिर ड्यूरिंग CPL सीजन, तो वो ना नए बॉल से प्रैक्टिस कर रहा था नेट्स में। तो मैंने उसे बोला कि यार मैं कैप्टन था, मैंने कहा मैं तो आपको नया बॉल नहीं कराता अनलेस हम 100 पे आउट हो जाएं। तो उसने मुझे कहा नहीं, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय कैप्टन कि जो 2019 का वर्ल्ड कप होना था 50 ओवर वाला, उन्होंने कहा कि फर्स्ट गेम वी हैव अगेंस्ट इंग्लैंड और रॉय जो है वो स्ट्रगल करता है अगेंस्ट लेग स्पिन। ईयर बिफोर द वर्ल्ड कप, 6 months बिफोर द वर्ल्ड कप। तो उसको ये उन्होंने बोला था कि तुम नए बॉल से प्रैक्टिस करो, तुमने फर्स्ट ओवर करना है, हमारा इंग्लैंड से पहला मैच है। 6 महीने पहले उसको बोला था और उसी ने किया था और उसने आउट भी किया था। रॉय ने 6 घंटे पहले पता नहीं होता कि मैं वही सोच रहा था। ऑफ द कफ क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, अभी भी जो प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं हमारे बोर्ड से वो 15 मिनट पहले मिलते हैं टूर से।
देखिए वसीम भाई, जो मैंने लास्ट टाइम देखा है, क्योंकि मेरा 2-3 साल से वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले ये होता था कि लास्ट पेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो आपको कभी फ्लाइट में बैठते हुए मिलता था या बस में बैठते हुए मिलता था कि लास्ट पेज बस साइन कर दो, और उससे पहले भी अराउंड 500 पेजेस होते थे। उन पे क्या लिखा गया हुआ है, उन पे क्या लिखा गया हुआ है, Usually the drill should be pages वही बुक तो नहीं जो वसीम भाई 2 सेकंड सर आपके इससे अंदाज़ा लगाया ना कि 6 महीने आपके आते हैं और वो कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट्स तो लंबे होने ही नहीं चाहिए, ये होने ही 3 महीने या 6 महीने के चाहिए। तो मतलब दैट गिव्स यू मैसेज कि डेवलपमेंट कैसे होगी। आप कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे को 6 महीने या 3 महीने का दे रहे हैं, कोई भी है, वो कप्तान है, प्लेयर है, कोच है, सेलेक्टर है, और प्लानिंग उससे 8 साल की मांग रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। और ख़ुद आप चाहते हैं कि हम रहें, लंबा अरसा रहें। As a player, you don't, but players want जो drill, normal drill दुनिया में स्पोर्ट्स पीपल की होती है, बोर्ड्स की होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट भिजवाते हैं महीना पहले ताकि आपका लॉयर देख ले कोई चीज़ तो नहीं चेंज करनी। So, like Shoaib said, they give you the last page on the sign. यही जानते हैं ना देखो। Wow. That's, by the way, you know, I'm sure if we consult a lawyer on that, legally that is not appropriate. That is almost borderline legally unethical. जी मैं ब्रेक पे जाने लगा हूँ। ब्रेक में हमारे पास बहुत टाइम होगा, आप मुझे बता दीजिएगा ब्रेक में जो बताना है, या वापस आके बता देंगे। ऑन एयर वापस आके बात करते हैं। So you're watching the Pavilion. I'm Fakhr and we'll be right back after these messages. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup in Australia. Group 1 games coming up. It is Ireland versus England first up, and then it's Afghanistan clashing with New Zealand. Ireland और England की बात कर रहे थे, England की अभी हमने बात की. Right now we've got an Ireland player with us. Let's listen in. It's Harry Tector. Harry, how do you feel about this playing here first? Yeah, it's obviously very special. I think any game we play against England obviously has a little bit more to it, but to play it at such a historic venue is obviously very exciting. Okay. And for you, talk about form, not just form in T20 internationals, but within your side and the importance that you kind of bring with each innings you play. Yeah, I think our top order probably got off to a slow start in the tournament, but thankfully the guys are starting to click, and I guess it's about peaking at the right time, and it feels like we're doing that as a team. Now, what is it that you've discussed coming into this game to play particularly against England? Well, I think just there's obviously a big dimensional change from Hobart to here. Obviously Hobart so big straight and quite a bit smaller square, and here's generally just big everywhere, so probably expect their lengths to change a little bit from Hobart to what we've been playing to today, but you don't want to get too caught up in what's going to come at you. Focus on the processes, as they say, and let the rest look after itself. Yeah, as they do say. Yeah. Now, as far as you're concerned, there's a role you play within the side, and what is that? I think it's something that you're constantly trying to improve and get better, isn't it? But I guess at 4 you're in so many different situations. You can be in the power play, then you can sort of manage the middle overs. So it's something that I really enjoy doing, and just trying to get better and better at it each and every day. Do you believe? Do I believe that we can win today? Yes. Absolutely. Okay, all the best. Thank you. Absolutely. That's good. The confidence is there, the belief is there that they can win today. I think the guy who was taking interview, he was not very confident in them. Pomi was there. Pomi Bongo, yeah. A very good commentator. I mean, it's a stiff task for them. They have got players who have scored runs, who have picked up wickets. That's why they're here. Otherwise, नीचे से शायद ना आते. West Indies को हराया हुआ है. So their confidence is pretty high. Different ball game against England. लेकिन ये है कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि इंग्लिश कंडीशंस का इनको आइडिया, तो दीज कंडीशंस आर वेरी सिमिलर टू इंग्लैंड बट विद बिट मोर बाउंस इन द पिच, सो दे शुड एंजॉय दीज कंडीशंस. द ओनली थिंग इज़ कि पिछले मैच में पाकिस्तान इंडिया के मैच में कोई 1,00,000 बंदा बैठा था, इधर मुझे लगता है कोई 10-15 लोग होंगे. So that is the only missing part. The only missing part. Yeah, that true. Second game up, Wasim. We've got also another important game, New Zealand versus Zimbabwe. Now, New Zealand very, very confident after that great win against Australia. But Afghanistan, not my apologies, Afghanistan, on the other hand, now would want a win under their belt. But
the Kiwis. Yeah, they haven't won a game against strong teams like Australia, England, India, New Zealand, Pakistan and South Africa yet. 29 games, 28 हारे हैं और फिर एक tie match की है. I suppose that's the next step for them to try to win against the big teams. Yeah, it is. Finn Allen looking very, very dangerous for all the teams. आज अफगानिस्तान उनको किस तरीके से हैंडल करे? I think उनका भी टेस्ट होगा against the quality spin bowling. Maybe Mujib start Even करे with the new ball, yeah. with the new ball. So let's see how he plays against the spin. Obviously, जिस तरीके से पिछले मैच में खेले हैं, उन्होंने सिग्नल दे दिया उनको कि he is not going to block anything. और वो खेलेंगे ऐसे ही क्योंकि उनका रोल ही है उस टीम में. But I think it is going to be a good contest. Strike rate highest in the world, not just 3 games, 4 games. 73 innings. 73 innings and strike rate of 172, averaging almost 30. That shows कि he's not a दड़ा जिसे हम कहते हैं, गंदा दूध नहीं मारता वो. मैं उसकी जो शॉट्स हैं वो पक्की शॉट्स हैं. जैसे आपने देखा कि पिछले मैच में उसने अगर आगे गेंद हुआ तो उसने सीधी मारी है जैसी, और फील्ड को भी उसने जहन में रखा है. जैसे मैंने मिड विकेट और स्क्वायर लेग पीछे किया है तो वो थोड़ा सा रूम दे के ओवर एक्स्ट्रा कवर और ओवर मिड ऑफ जा रहा था. तो इट मीन्स कि ही नोज इस गेम और उसको पता है कि मैंने क्या शॉट खेलने हैं, कौन सी ऑप्शन है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू द बॉल एंड अकॉर्डिंग टू द फील्ड. Yeah, absolutely. That is something which is very important for a batter. And that too against one of the fastest bowlers in world cricket. Yeah, That true shows the temperament कि बॉलर का नाम नहीं वो खेल रहा. He believes in himself. और स्टार्क है या ऑस्ट्रेलिया है, it doesn't matter. If the ball is there, he is going to go after. I know. So that's I think बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है उनकी इस रोल के लिए स्पेशली ऊपर. Shoaib, if you look at his bat speed is phenomenal and hardly any backlift in some of those shots. Obviously against the new ball आपको हाई बैकलिफ्ट की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि नया बॉल होता है तो आप वैसे उसको टाइम भी करें. और एक और चीज़ है, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. Yes. बहुत फिट भी है और यही उनकी की है कि सबसे अच्छी चीज़ कि जहाँ बॉल हो वो उस तरफ खेलते हैं. तो मेरिट पे खेलना इसको कहते हैं कि जिस तरफ बॉल है उसी तरफ आप जो है खेलो, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द न्यू बॉल. और अगेंस्ट स्पिन जो है वो आज उनका टेस्ट होगा. आई एम श्योर मुजीब से वो नया बॉल करवाएंगे. हो सकता है राशिद भी आके पहले 6 ओवर में ही इज़ नॉट कंफर्टेबल बॉलिंग इन द फर्स्ट 6 ओवर जो मैंने देखा है. लेकिन मुझे लगता है कि आज कुछ वो चांस ले सकते हैं. लेकिन कॉन्वॉय साथ में खेलते हैं लेफ्टी तो नबी भी कर सकता है बॉल और उनका वो जो आर्म बॉल है. जी बिल्कुल बिल्कुल. शोएब देखिए, पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू एम्ब्रेस T20 क्रिकेट. ठीक है, जबकि बाकी दुनिया बड़ी रिलक्टेंट थी. इवन इंडिया 2007 में टीम भी था जो आना चाह रहा वहाँ वर्ल्ड कप में. तो हमने T20 पहली दफ़ा कराया 2005 में टूर्नामेंट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट. उसके बाद हम 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स में भी पहुँचे 2007, 2009 और एक हमने जीता आई सपोज. बट फिर हमारे पास प्लेयर तब अच्छे थे. एक बूम बूम शाहिद अफरीदी था, रज़ाक था, फिर ऑफ कोर्स अ फिनोमिनल प्लेयर जो कि लंबा नहीं खेल पाया अनफॉर्चुनेटली, इमरान नज़ीर था. उसके बाद आपने सियालकोट स्टैलियन से इतनी सक्सेस हासिल की, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने किए. उस पावर हिटिंग का और अब की पावर जो पाकिस्तान टीम में पावर हिटिंग है, इनमें फ़र्क क्या है? ये व्हाई आरंट वी प्रोड्यूसिंग पावर हिटर्स ऑन कंसिस्टेंट बेसिस इन दिस फॉर्मेट? उसमें देखें वसीम भाई, अब ये है कि जो वर्ल्ड क्रिकेट है ना वो ऑलरेडी हमसे 2-3 स्टेप्स जो है वो आगे है. ओके. तो हम उसको कैचअप करते हैं लेकिन हम अपना टाइम ले जाते हैं. तो वो फिर वर्ल्ड जो है वो 2 स्टेप्स और आगे चला गया होता है. तो आई गेस ये इंडिविजुअल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको अगर वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा या वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही हैं तो आपको ख़ुद ये काम करना है. आपको ये देखना है, असेस करना है कि अब बहुत ईजी है वसीम भाई कि मोबाइल पे आप हर चीज़ देख सकते हैं. तो आपके पास एक्सेस है, आप देखें कि दुनिया का बेस्ट पावर हिटर कौन है और वो क्या ऐसी चीज़ करता है कि जो उसको फ़ायदा दे रही है और वो कंसिस्टेंटली जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है. अमेरिकन भी तो आता था बेसबॉल का प्लेयर हिटिंग के लिए, दूसरी टीमें हायर करती थी. एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसा होता था. दूसरा वसीम भाई मुझे ये लगता है Shoaib, I'm going to have to interrupt you guys there because we got to go off to Melbourne where the 2 captains are walking out right now and we are ready for a toss brought to you by Dettol Soap.
fifth match of the Super 12 stage, and Andrew Balbirnie is here next to Joss Butler and the match referee Ranjan Madigali. Andrew, you've got the coin. Heads. Heads is the call. It is a head. England have won the toss. Joss, what are you going to do? We're going to bowl first. It's obviously a slightly iffy forecast. How much of that has played into your decision? Yeah, it plays into it quite a bit. Obviously a bit unsure as to the weather, so we feel it's beneficial to bowl first. Good start from your team in Perth. What have you focused on since then? Areas of improvement, perhaps? No, we just focused on Ireland. To be honest, we've been sort of preparing for this match as soon as the other one's finished. It's a huge game for us, and we're excited to get going. You're outstanding in the field at Perth. Here at the MCG, there's going to be a premium on that facet of the game as well. Yeah, absolutely, and a lot of these grounds in Australia being big playing areas, that fielding is a huge part of that. So we set a really good standard in the last game, and we must continue that today. I believe you're unchanged. You've got 2 games in 3 days here at the MCG. So was there any thought to perhaps resting or rotating ahead of the game on Friday? Not particularly, no. I think we could have changed the team, but we'd like to get what we think is our best 11 on the field, regardless of whether there's 2 games in 3 days. Again, a bit unsure with weather around and etc. So we see this as a massive game for us, and we've picked what we think is our best team for the day. Go well today. Thank you. Good luck. Andrew, dare I ask, you'd probably like to have done the same thing, would you? Yeah, I think so. With a bit of rain around, and chasing a T20 can sometimes be a bit easier knowing what you have to get. But look, try to get runs on the board and do our best to squeeze as best we can. You came unstuck against Sri Lanka in the opening Super 12 game. What areas of improvement have you focused on since then? I think just when we're under pressure to come out with a few punches, and we're going to play against top quality bowlers throughout this competition, and if we don't come out with that aggression and that approach, we're going to come unstuck. So the message has just been to be clear with our plans and back at 100%. Spent a long time in Hobart, very different ground dimensions here. How much thought have you had to give to that? Yeah, we have. We played a warm-up game here before we went to Hobart. Hobart was very good to us, a lot of memories made there, but we have a chance to create some pretty special memories here as well. It's a long time since these 2 teams have played a T20 international against each other. I reckon you were a pretty young man watching on television when they did. Did you think then that you might be standing here as captain of your country? I think you always hope. I think there's 2 of our guys here who played in an Under-19 World Cup the same year. So it's pretty special for this group. We've got a lot of followers here, and being the first Irish team to play at the MCG is certainly very special. One change for you. What is it, quickly? Yeah, Fionn Han comes in for Simi Singh. Go well today. Thank you. England then have won the toss, and they will bowl first. Well, the news out of MCG is that England have won the toss and have elected to field first. Waqar, Ireland, straight away under pressure? Yeah, I mean, ho gayi. You could clearly see on the captain's face also that he was a little disappointed because toss was important. Yeah, they got to really fight it out. I mean, early on with the new ball, Wood go, Vokes go, they have to deal with that, you know. They're on high at the moment. So, early on, agar survive karte hain, especially I would say, Paul Sterling, you know, early on nikal leta, then he can be very dangerous. Kaptan acha batsman hai, dono open karte hain. So, I think the opening slot is going to be very, very crucial because if England gets on the roll, और अगर उन्होंने उनका बॉल सही जगह पे गिरना शुरू हो गया तो they will really trouble this batting lineup. Misbah, what would be the ideal total for Ireland under these conditions now? I think minimum Ireland सोचेगी कि at least 160 के around वो करें to put England under pressure. बाकी ये है कि विकेट इतनी आसान नहीं है. Obviously last game में हमने देखा struggle किया काफ़ी दोनों टीमों ने. Anything over 150, they have chance क्योंकि उनके बॉलर जो मीडियम पेसर्स हैं वो भी उनको इन कंडीशंस का आइडिया अगर वो सही जगह पे बॉल करेंगे और साथ ऑब्वियसली एडेड प्रेशर होगा इंग्लैंड पे क्योंकि आयरलैंड गॉट नथिंग टू लूज़ दे आर इन सुपर 12 ये उनकी अचीवमेंट है कहीं से भी उनको थोड़ी सी स्निफ मिली तो इंग्लैंड को उस प्रेशर को डील करना वो थोड़ा सा एक आयरलैंड के हक में चीज़ जा सकती है बट उसके लिए उस स्टेज तक उस पॉइंट तक लेके जाना इस मैच को दैट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर आयरलैंड जैसे वकार भाई ने कहा स्टर्लिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैन वो ऐसा प्लेयर है कि वो ऐसी इनिंग खेल सकता है आज क्विक फायर 50 कर दे 60-70 कर दे तो इंग्लैंड प्रेशर में आ सकती है
They are used to the conditions. अभी ये बात हम कर रहे थे कि Ireland are used to England, दोनों को उन्हीं टाइप की conditions रहे, वो मिल गई. How much does that help psychologically to a batsman? You walk out there, it's overcast, green top pitch. I think you stick to your natural game. ठीक है, आप सोचते हैं कि यार conditions ऐसी, आप उसे assess करते हैं, then you come up with your own game plan. तो मेरे ख्याल में it's not going to be tough when it comes down to English batters, क्योंकि उनको mostly medium pacers के against deal करना पड़ेगा. But जब real pace के साथ इस pitch, इस bounce के साथ deal करना पड़ेगा, तो Ireland मुझे लगता है कि उनके batters के लिए it's not going to be easy. It's going to be a challenge. We've got the playing 11 then. Wasim, why don't you take us through them? On your screens now. Ireland. Yeah, the main man, the skipper is there. He's got to get some runs, and everybody is hoping that Sterling, जो कि इनका dangerous player, everybody said on this panel as well, he had to fire as well. And we've seen Camper, we've seen Dockrell, they were in good nick in qualifiers, but I think against England, especially after losing a toss, they really have to bring their A game against one of the top teams in world cricket. So big test for Ireland team, but like Misbah said, they've done well, they've qualified, but now you just need them to, you know, slay one of the giants. Yes, absolutely. Waqar, take us through the English team now, coming up on your screen. Yeah, no change, same team. I don't think they needed to change. Yes, they lost 5 wickets in chasing that total against Afghanistan, but they're very destructive batsmen. You know all these big names in there. They're all-round team. We still haven't seen Brooks' best yet. I mean, we saw in Pakistan, he's another very, very fine batsman. And the bowling, they've got quite a few all-rounders in the side. Sam Curran picked up 5 wickets in the last match. So they are a very, very fine side. They're a team which probably be thinking that, you know, this is their World Cup. So for that, they have to really make sure that जब आप इस तरह की associate team के against खेलें, so they play to their potential. Don't just take it lightly, because as conditions are, you know, there is a possibility that Ireland might sneak in. और added advantage जो Stokes bowling 4 ओवर की उन्होंने last match में, that gives them वो जो एक balanced team का overall बहुत ज़बरदस्त हो जाता है उससे. All right, with that, we're going to take a break here on the Pavilion. We'll see you momentarily. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. Group 1, 2 games coming up. The first one is between England and Ireland. England have won the toss, elected to field, and the second one is going to be Afghanistan versus New Zealand. And with that, it is time for expert predictions, brought to you by Olivia. Okay, let's start off. Shoaib, your predictions for today. England and New Zealand. England and New Zealand, safe bet. Waqar. आप लिखते क्यों हैं इसको? ऐसे ही याद रखने को. याद रखने के लिए. England, New Zealand. England, New Zealand. शुक्र करें आपसे साइन नहीं करवाता. तो हमने दूसरी बोलनी थी. नहीं, मैं को हम शाम को जिक्र नहीं करते ना उसका. आज चले आज से करना शुरू कर देंगे. Wasim. England and दूसरी टीम New Zealand. New Zealand. All right, Misbah. लैंड साथ जो मर्जी लगा है. लैंड. अच्छा, वेल क्लेवर. हाँ, आयरलैंड भी हो सकता है, इंग्लैंड भी हो सकता है. नहीं तो लैंड करा दियो. कितने लैंड करना है दसो मैनू. किसी नवी जगह ते लैंड करो. जिथे पाइन रोड आइसलैंड. न्यूजीलैंड इंग्लैंड न्यूजीलैंड. England, New Zealand. All right, England, New Zealand. That's what we're saying. And those are your expert predictions, brought to you by Olivia. Shukriya. Jaldi se ek cheez, Misbah, how do you think the Afghanistan batsmen are going to figure against the New Zealand attack? मुश्किल होगा कंडीशंस की वजह से. आई थिंक अफगानिस्तान को कुछ ज़्यादा ही टेस्टर मिल रहे हैं. पिछले मैच में भी फिर ये पिच भी ऐसी है. इट इज़ गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर देम. लेकिन ये मेरे ख्याल में दूसरा उनको थोड़ा सा जो इनकरेजिंग चीज़ है वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग की, दे विल बी लुकिंग के कहीं हम 140 कर जाएं, तो जैसी मर्जी पिच हो वो किसी भी टीम को मुश्किल टाइम दे सकते हैं. Yeah, they have the habit. जब तक ये इशू फिक्स नहीं करेंगे उनका बैटिंग वाला,
तब तक वो किसी बड़ी टीम को हाँ टफ टाइम थोड़े टाइम के लिए दे सकते हैं, लेकिन जीतना वही कि जो उनके बैटर्स हैं वो ऐसे टारगेट पे नहीं पहुंच पा रहे कि जहाँ पे उनकी जो बॉलिंग है वो उनको डिफेंड कर सके उस टारगेट पे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है फिर 130 140 ठीक है, बट somewhere down the line they have to score around 160 to compete against big teams. Yeah, and that is going to require a lot of batting, Waqar. Yeah, application. I think वरना इन conditions में इन pitches पर बहुत मुश्किल होगा, especially coming from subcontinent. Runs करना आसान नहीं होगा. You got to play aggressively. Hazratullah Zazai has been a little disappointment. I mean उसको उन्होंने ऊपर से रखा हुआ है to be more attacking. और उसके बैट पे गेंद नहीं लग रहा. In defense, it was quick bowling. Yeah, I mean वो तो क्या आज कौन सी आसान मिलेगी? So that is going to happen. So that's where they have to evolve as batters too. That's because हर जगह flat wicket नहीं मिलेगी. So he's been totally off color. So अगर वो runs करता है और वो जिस तरीके से रन करता है अगर वो कर गया जिस दिन तो तब वो जो मलिक कह रहे हैं 160 वाला चक्कर आएगा. Otherwise इन कंडीशंस में बड़ा मुश्किल होगा. हमने वर्ल्ड कप का मैच देखा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहाँ पे यूएई में, वहाँ पे भी उन्होंने उड़ा के रख दिया था उनको बाउंसर्स पे. फर्स्ट 2-3 overs they just kept on bowling them short, quick. और उसके बाद अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप संभली नहीं है. तो यहाँ पे भी टीम साउदी एंड देन बोल्ट उनकी स्विंग इनिशियली, फिर फर्गूसन आ जाएगा और वो उसने बिल्कुल जो है सिर्फ आगे गेंद करने. All right, I think gentlemen. that is the test. Thank you very much. Well, we wish both the teams all the best, gentlemen. We will see you on the other side of the games. याद रहे कि ग्रुप 1 के 2 मैचेस हैं. अब से कुछ लम्हों बाद आप देख सकेंगे पहला मैच आज का आयरलैंड बामुकाबला इंग्लैंड, और उसके बाद दूसरा मुकाबला आज का हमारा जो है वो आपके सामने आएगा. वो है अफगानिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड. दोनों के हवाले से हमने गुफ्तगू की. देखते रहिए द पेविलियन ऑन A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. We'll see you after the games.